हेलो दोस्तों, आशीष क्याल हियर एंड वेलकम टू आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल। आज मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ में हाउ टू ट्रेड फेल्ड प्राइस एक्शन पैटर्न और स्ट्रैटेजी। सो फार यू माइट हैव हर्ड अबाउट प्राइस एक्शन एंड हाउ टू गो अबाउट इट, बट टुडे इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन ट्रेड दिस फेल्ड प्राइस एक्शन। फेल्ड प्राइस एक्शन होता क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट पैटर्न है कि अगर आप इसको यूज करेंगे ना दोस्तों, तो आप रियलाइज करेंगे इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल way to trade stocks, index. You can apply this concept on anything and everywhere. I'm going to talk and apply this concept on cryptocurrency Ethereum. But as I said, you can extend this understanding of price action, failed price action on any of the asset classes. And आगे बढ़ने के पहले very quickly, please ensure that you are putting your comments down there because उससे मुझे पता चलता है ये videos आपको पसंद आ रहे हैं। साथ ही में do ensure that you are subscribing to the channel and sharing it across, liking it also। और क्या सुनना चाहते हैं आप, क्या देखना चाहते हैं, ये सारी चीजें नीचे लिखिए। चलिए चलते हैं आगे। आई एम गोइंग टू यूज डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म वेर आई एम गोइंग टू शो यू अ चार्ट एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी वेरी सिंपल वे अ ट्रेड सेटअप जो आप लोगों ने आज तक शायद नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। एंड मैंने भी ये बहुत कम बार बात की है या I'm revealing it for the very first time. So do ensure you get it in the right way. So let me just share across my screen very, very quickly. And I'm going to come here on the platform. This is Delta Exchange platform. यहाँ पर मैं आऊंगा futures में. So I can see all the markets. I can see futures. You can see this chart of Bitcoin. I'm going to come here and I'm going to select Ethereum USD, ETH USD। एंड यहाँ पर आपको सारे एनालिटिक्स मिल जाएंगे जहां पर मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ वन डे टाइम फ्रेम। सो द इंटरफेसेस ऑफ ट्रेडिंग व्यू, यू कैन क्लियरली सी एवरीथिंग दैट यू यूज ऑन ट्रेडिंग व्यू, यू कैन यूज इट हियर ऑल्सो। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं आप। प्लेलिस्ट है एक क्रिप्टो की, एक बॉलिंगर बैंड्स की भी प्लेलिस्ट है दोस्तों, वो भी देखना ना भूलना। बॉलिंगर बैंड्स के मैंने 10 वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे। सो डू एंश्योर यू चेक दैट ऑल्सो। यहाँ पर इफ यू कैन क्लियरली सी दैट आफ्टर अ वेरी शार्प राइज, ठीक है, इथेरियम में हमने 4000 का लेवल्स देखा। पोज दैट इट केम डाउन अगेन द शार्प राइज एंड इट इज शोइंग एन ओवरलैपिंग करेक्शन। सो व्हाट आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज दैट द ओवरऑल पैटर्न इज अपसाइड, क्योंकि ऊपर जाते वक्त बहुत स्पीड से जाता है और नीचे आते वक्त ऊपर नीचे करेक्टिव पैटर्न में आ रहा है। सो अगर आपको वेव थियरी भी आता है तो यू माइट अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे। So this means that the overall trend for ETH USD is on the upside. Overall, broader trend is on the upside. Short term में definitely we can see it is moving between the mid bands and it is moving between the lower end of the bands. Now यहाँ पर बहुत ही interesting चीज जो आपको देखने मिलेगी वो ये है। Let me open up and annotate it on the screen for you all. यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर वी कैन सी प्राइसेस हैव बीन मूविंग बिलो द बैंड। स्पाइक दे रहा है, रिवर्स स्पाइक दे रहा है, रिवर्स स्पाइक दिया वापस से यहाँ पर नीचे एंड रिवर्स। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। आई विल शो यू वन थिंग। ये जो प्रीवियस सपोर्ट्स भी है, सो व्हाई दिस 3200 बिकम सच एन इंपॉर्टेंट लेवल। The low which is formed here on the Ethereum is also at this level. Low formed is also at this level. And we can clearly see this is a very, very important price action support area. ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यू कैन क्लियरली मार्क अ ट्रेंड लाइन ऑल्सो हियर। सो इफ आई गो टू द ट्रेंड लाइन, आई मार्क अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम हियर, आई कैन क्लियरली, लेट मी जस्ट डू दैट। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है फॉर दिस क्रिप्टो करेंसी। नाउ व्हाट इज अ फेल्ड प्राइस एक्शन पैटर्न? इफ आई लुक एट द, if I zoom in and look at the chart here, so I know this is a very important support area. साथ ही में अगर आप यहां पर देखेंगे, you can clearly see there was a support taken by the prices here, support taken by the prices here, and यहाँ पर we can see a breakdown. We can clearly see a breakdown that happened below this price.
सो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए बिकॉज इट गेव अ नेगेटिव बेरिश ब्रेकडाउन इंट्राडे में, क्लोज नहीं किया. Suppose that it again reversed up. So हुआ क्या? This was the support which got broken on the downside and a false break. So this becomes my false break. और ये false break के बाद में prices reversed back on the upside. So the mid band hurdle is at 3504, which is we can see now. Upper band is at 3685. एंड द लोअर बैंड इज एट 3323. सो ये मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिख देता हूं. एंड वी गॉट अ फॉल्स ब्रेक. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि देर वॉज सपोर्ट, broke the support, failed, moved back within the band, and is now at 3504, which is the mid band. So mid band is acting as a resistance. If prices manages to break above 3504 mid band, we can very confidently say कि यार ये 3685 तक तो जाएगा. और फिलहाल अगर नहीं भी गया तो ये रेंज में रहेगा. सो फॉर मी इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू कम विथ अ स्ट्रेटेजी जहां पे मैं काफी दूर का एक स्ट्राइक प्राइस ले सकता हूं पुट का, एंड देन सेल दैट पुट स्ट्राइक प्राइस विथ द assumption कि यार 3200 ब्रेक नहीं होने वाला. सो दैट कैन बी माई स्ट्रेटेजी on Ethereum USD. And fortunately, we have options available on the platform. So I can go and check कि क्या मेरे पास में options है, क्या प्राइस चल रहा है, क्या उसका IVs है, and can I sell it now? साथ में ये डेली टाइम फ्रेम पे. So what is a failed breakout? We saw that and we are betting on that pattern. यहाँ पर कॉन्फिडेंस कब आएगा 3504 के ऊपर, बिकॉज वी कैन क्लियरली सी रिवर्सल. एंड ऑल्सो थ्री कैंडलस्टिक रूल दोस्तों, अगर आपको पता होगा, आई कीप टॉकिंग अबाउट द थ्री कैंडलस्टिक रूल. इफ नॉट देन यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ माय आई ओपनिंग मास्टर क्लास जहां पे मैं ये चीजों के बारे में बात करता हूँ. नाउ लेट मी गो ऑन एन आवरली चार्ट एंड जस्ट सी दी चार्ट ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम की यार क्या हो रहा है. ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम ऑल्सो आई कैन सी द प्राइसेस हैव clearly moved up. See, look at this failed breakdown. ये failed pattern है. This is a failed pattern on the downside, reversed, and we can see upside and positive movement. So similarly यहाँ पर भी hourly chart पे एक failed pattern बन सकता है, and we can again back reverse on the upside. So mood तो upside का है, and let us see if we can get any trading opportunity, or we'll wait for 3504 to be taken out. So let me go on the options. I'm going to select Ethereum and I'm going to select 5th of July as the expiry. एक वीक की एक्सपायरी का टाइम फ्रेम रखते हैं, and we will see if we can get decent enough strike price around 2900. We can see there is a strike price 2900 पे, जहां पर हमें mark price मिल रहा है 4.12. If I look at 30th June also, I'm not sure if we are getting that strike. नहीं, हमें put का strike 2900 का जो strike price है, we are getting it at liquidity कम है यहाँ पर क्योंकि 3.50 और 4.80 का spread है. And mark price is the average price is that you can see is 4.16. It's the median of the average. So 4.16 का price है. So what I can do is 2900. तो 2900 का पुट हम बेच सकते हैं 3200 का स्टॉप लॉस के साथ में, एंड देन वी कैन वेट एंड सी कि भाई ये ओवरऑल चार्ट क्या बता रहा है. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कम हियर, सिलेक्ट अ सेल हियर, यहाँ पर जाके, एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड. I can see the best bid is 3.60, but mark price 4.19 है, so I can put a price at 4.10. And दोस्तों ये this is just ensuring it's for educational learning purpose. I'm just showing you how it works. So 4.10 पे मैं बेच सकता हूँ. Quantity I can keep as say 2 Ethereum. If I want to sell 2 Ethereum, you can sell 2, you can sell 1.5. That's the best part. Once I click on, and required margin is only $36.29 US. If I click on sell, margin required is 36.29 and premium received is going to be around 8. तो अगर सही गया ये ट्रेड तो मुझे अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देखेंगे यहाँ पर
20-22% का ROI एक हफ्ते के अंदर मिल सकता है अगर सही गया तो। गलत गया सो आई माइट लूज हाउ मच आई एम गोइंग टू मेक, क्योंकि स्टॉप लॉस मैं सिस्टम में डाल के रखूंगा। विदाउट स्टॉप लॉस यू कैन नॉट ट्रेड, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So you can simply come here, place the order, and you can see the order is submitted. At the bottom on the positions, you can start be refresh होगा तो you can directly see the order and you can clearly see 4.10 पे 2 इथेरियम का पोजीशन मैंने यहाँ पर डाल दिया। दैट्स माय ऑर्डर, एंड इफ इट गेट्स फिल्ड वी विल कम टू नो कि यार ये ऑर्डर फिल हो गया है कि नहीं हो गया। लॉजिक वही था दोस्तों, फेल्ड ब्रेकआउट पैटर्न पे ट्रेड करना था, एंड वो लॉजिक के ऊपर हमने यहाँ पर एक ट्रेडिंग पोजीशन ली है। तो वंस इट गेट्स फिल्ड इमीडिएटली स्टॉप लॉस सिस्टम में डालना है। आई विल नॉट टेक एनी चांस ओवर हियर, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। ऑसम गाइस, सो ये था सिंपल सा एक वीडियो जिसपे मैंने आपको एक प्राइस एक्शन फेल्ड स्ट्रैटेजी के बारे में बताया। और अगर आपको ऐसे स्ट्रैटेजीज और सुनने हैं, जानने हैं, सो कमेंट लिखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, एंड सेंड इट अक्रॉस टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड साथ ही में इफ यू वांट टू चेक एंड टेस्ट योरसेल्फ, देयर इज अ लिंक ऑफ डेल्टा एक्सचेंज, यू कैन एक्सपेरिमेंट, चेक हाउ इट वर्क्स, एंड डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। एंड स्टॉप लॉस के साथ काम करना, रिस्क होता है ट्रेडिंग में, प्लीज कीप दैट इन माइंड। वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड दिस इज प्योरली फ्रॉम लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पस। और जाते जाते वी हैव अवर ब्रह्मास्त्र मेंटरशिप प्रोग्राम which is coming up in July itself. So do ensure you are a part of Brahmastra program, which is over the period of 3 to 4 months, and it's going to talk about time cycles, wave theory, and सारी चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों उसमें। तो if you have required any kind of assistance, you can simply contact on the number given in description. More information in the description. So be a part of this wonderful life transformation journey of Brahmastra. आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल टाइम एंड बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।